लेबर इकोनॉमिक्स के आज का टॉपिक है न्यू क्लासिकल थियरी ऑफ वेजेस, वेज डिटर्मिनेशन. In last lecture we had discussed about the classical theory of wage determination, that in that how classical uh, economists believes in the powers of the demand and supply of labors and the powers of labor market, according to which there is no such problems of unemployment and overproduction occurred in any time in economy. And uh, फिर भी अगर if there is in some extreme or in some rare conditions, if overproduction is occurred, or the problem of unemployment will occur, it that will be only for a short period. And the forces of demand and supply will automatically adjust themselves according to the market conditions, and the equilibrium prevails in the market, for which they believes in the Pigu's wage and price flexibility, that wage and the prices of the factors are flexible and they adjust themselves accordingly, so that there would be no such problems of unemployment or overproduction. So in that context, let's begin our topic, uh, which is the further addition to the classical economics, the neoclassical theory of wage determination, and which is more scientific, you can say, which is more scientific, more accurate, modern in terms of its concepts, easy. So myself, as you all know, Kavita, assistant professor in economics, Government Girls Arts College, Kota. Neoclassical economics is an approach to economics focusing on the determination of goods, outputs, and income distributions in markets through supply and demand. This determination is often mediated through a hypothesized maximization of utility by income constrained individuals and of profits by firms facing production costs and employing available information and factors of production. In accordance with rational choice theory, a theory that has come under considerable question in recent years, neoclassical economics dominates microeconomics and, together with Keynesian economics, forms a neoclassical synthesis which dominates mainstream economics today. Basically, the neoclassical economics is based upon the microeconomics. Although neoclassical economics has gained widespread acceptance by contemporary economists, there have been many critics of neoclassical economics, often incorporated into newer versions of neoclassical theory, but some remaining distinct fields. So, this is the basic background of neoclassical theory. Let's discuss its origin. The term was originally introduced by Thorstein Veblen in his article Preconceptions of Economic Sciences, in which he related marginalists in the tradition of Alfred Marshall to those in the Austrian school. So basically, थॉर्स्टिन वैबलिन ने सबसे पहले ये टर्म यूज़ किया था अपने आर्टिकल में, एंड इसको जो आगे बढ़ाया वो थे एल्फ्रेड मार्शल. No attempt will here be made even to pass a verdict on the relative claims that recognize two or three main schools of theories. So later Hicks, George Stigler, Karl Menger, William Stanley Jevons, Leon Walras, John Bates Clark, and many other economists ने neoclassical approach को more refined किया, मोर साइंटिफिक बनाया और उसे आगे बढ़ाया.
today it is usually used to refer to mainstream economics, as we all know, although it has also been used as an umbrella term encompassing a number of other schools of thought, notably excluding institutional economics, various historical schools of economics, and Marxian economics, in addition to various other heterodox approaches to economics. So, neoclassical economics is characterized by several assumptions, जो हम अभी पढ़ेंगे इसके assumptions, उनके आधार पे आगे theories develop हुई हैं. So the first one is people have rational preferences. Means basically neoclassical approach is a behavioral approach, is based on human behavior. So human is a rational, है ना, मतलब कि जो man is a rational being, है ना. So और he has a rational preferences and rational choices. वो अपनी जो प्रेफरेंसेस थे उसको चॉइस के अकॉर्डिंग एक क्रम में या एक किसी फॉर्म में अरेंज कर सकता है. इंडिविजुअल मैक्सिमाइज यूटिलिटी एंड फर्म्स मैक्सिमाइज प्रॉफिट. द सेकेंड अजम्पशन इज जो इंडिविजुअल है, जैसे लाइक अस, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी. यूटिलिटी मीन्स या उपयोगिता. हम किसी भी वो गुड्स और सर्विसेज का जो कंजप्शन करते हैं, उपभोग करते हैं, तो हमारा उद्देश्य रहता है उससे प्राप्त जो हमें उपयोगिता होती है वो अधिक से अधिक हो. और जो फर्म्स होती हैं उनका उद्देश्य होता है अपने प्रॉफिट को अधिक से अधिक करना. People act independently on the basis of full and relevant information. Because people are rational, तो they blindly act नहीं करते हैं, वो सोच समझ के ही किसी कार्य को करते हैं और जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग. So these are basically three assumptions of neoclassical theory. अब इस neoclassicals के अकॉर्डिंग वेज डिटर्मिनेशन कहाँ होता है, लेट्स डिस्कस. According to the basic neoclassical model, the determination of the level of employment and the unit of price is dealt with the belonging to a perfectly competitive market comparable to the consumer good. The only difference is that the roles of the agents are reversed. The wage rate and the volume of labor result in the free confrontation of the global supply of demand for and the labor. So the segments of the cross express the facts the demanders and the suppliers optimize their choices. जहाँ डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर ही वेज रेट और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन होता है. द बेसिक न्योक्लासिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेबर मार्केट. In this basic model, labor is considered perfectly homogeneous. All workers have the same productivity. The basic idea in neoclassical distribution theory is that incomes are earned in the production of goods and services, and that the value of productive factor reflects its contribution to the total product. The marginal product of an input, basically marginal productivity theory is a neoclassical theory. न्योक्लासिकल theory of wage, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसके मैंने आपको PDF नोट्स भी दिए हैं. बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट इज़ अ पार्ट ऑफ न्योक्लासिकल अप्रोच, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी एक लेबर की, उतनी ज़्यादा उसकी डिमांड होगी, और उसकी वेजेस जो होती हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग. अगर वेजेस ज़्यादा है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम है तो क्या होगा, एक फर्म को हानि होगी. और इसके उल्टा अगर हम देखें कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है और वेजेस कम है तो वहाँ पे लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होगा. सो द वेज रेट कहाँ डिटर्मिनेशन होगी, जहाँ पे कि मार्जिनल रेट और वेजेस दोनों इक्वल होंगे. ठीक है, यही है बेसिकली द कंटेंट ऑफ न्योक्लासिकल इकोनॉमिस्ट. और मैंने आपको इसमें डिस्कस किया है इस चीज़ को ही डिटेल में. आप इसके नोट्स मेरे से ले सकते हैं. बेसिकली द कोर जो है वो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी. द
जो हमने डिस्कस करे हैं प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही वेज रेट का डिटर्मिनेशन होता है। तो आप प्लीज़ इस मेरे नोट्स को भी पढ़िए और मेरे इस लेक्चर को सुन के आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। जो चीज़ आपको समझ में ना आई हो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।